Hello student, class 12th, subject physics, and chapter name is moving charges and magnetisms, and our topic is torque on a current carrying coil in a uniform magnetic fields. That means यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में हमें एक किसी भी टर्क्यू दैट मीन्स धारावाही लूप करंट करंट कैरिंग कॉइल्स करंट कैरिंग कॉइल्स पे हमें क्या करना है, टर्क्यूज फाइंड करनी है. देन नाउ whenever a current is made to pass through a coil placed in a uniform magnetic field. कोई क्या है, करंट्स है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में हमारे पास बना हुआ है. हमारे पास एक कॉइल्स है, उस पर प्लेस्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे हमारे पास कोई कॉइल्स प्लेस्ड है. देन अ टर्क्यू एक्ट्स ऑन इट्स विच रोटेट्स द coil and tries to make it perpendicular to the directions of the magnetic fields. That means axis of coil tries to be parallel to the field. Repeating again, whenever a current is made to pass through a coil through in a uniformly magnetic field, when a torque acts on it which rotates the coil and tries to make it perpendicular to the directions of the field. That means axis of coil tries to the parallel to the field. Look at this picture and try to understand. Suppose P, Q, R and S. P, Q, R, S is a rectangular coil. P, Q, R, S is a रेक्टेंगुलर, हमारे पास कोई आयताकार एक लूप है, कॉइल्स है, विच इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स साइड इज पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस वर्टिकल एंड साइड क्यू आर एंड एस पी रिमेन्स हॉरिजॉन्टली. मैग्नेटिक फील्ड स्पेस को प्लेस किया गया है. PQRS is a vertically and PQRS is a vertically and QR and SP is a horizontally. Let length of coil PQ or RS that is equal to small l, length of coil PQ that is equal to RS that is equal to small l, and width of coil is a QR that is equal to SP that is equal to small b, because it is a rectangular coils. Suppose the current I is flowing through the coil in PQRS directions, P to Q, Q to R, R to S, S to P directions. Then the force acting on current carrying sides SP will be. Then the force acting on current carrying sides SP will be given by F1. SP is given by F1. It is F1. Then F1 is given by I is a current and SP multiply P. SP side and magnetic field is B. And the directions of force जो हमारे पास F1 है, force F1, the directions of force F1 will be upward to the plane of coils. इसकी directions होगी upward to the planes. And similarly
the force on side QR will be given by F2. साइड QR जो है हमारे पास फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा F2 is given by I is a current and QR is side and B is magnetic field, and the directions of the force F2 will be downward to the plane. इसकी डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड टू द प्लेन, एंड F1 की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड टू द अपवर्ड टू द प्लेन, एंड F2 is downward to the planes. Now the two forces F1 and F2 having same line of actions, having सेम लाइन, एक ही लाइन पे हमारे पास एक्शन कर रहे हैं ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट. देखिए हमारे पास एक ही लाइन्स पे दो, हमारे पास F1 एंड F2 दोनों हमारे पास एक ही लाइन्स पे वर्क कर रही है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. एक का अपवर्ड है एंड सेकंड का डाउनवर्ड. ऑब्वियसली दे विल कैंसिल देयर इफेक्ट. F1 एंड F2 अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा एंड हैव नो कंट्रीब्यूशंस इन द रोटेशंस ऑफ कॉइल. दैट मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा इन दिस कंडीशंस. जो हमारे पास जो कॉइल्स है उसमें रोटेशंस नहीं होगा. नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PQ. फिर से पिक्चर्स की बात कर लेते हैं. PQ एंड RS. PQ एंड RS. PQ हैविंग फोर्स F3 and RS having F4 force for side RS and there. Now in this picture the force acting on side on side PQ F3. PQ साइड पे हमारे पास फोर्स जो है PQ दैट इज इक्वल F3 दैट इज इक्वल टू I एंड साइड इज अ PQ वेक्टर PQ क्रॉस प्रोडक्ट. देन आर वी का राइट वेक्टर ऑफ F3 दैट इज इक्वल टू I PQ that is equal to L, length of coil, then small l, and B sin 90 angle because field and length is perpendicular to each other, then sin 90 that is equal to ILB. We know that sin 90 that is equal to 1, then vector of F3 that is equal to ILB. And according to Fleming left hand rules, the directions of force F3 will be outwards perpendicular to the planes of coils. इसकी जो डायरेक्शंस होगी जस्ट आउटवर्ड होगी, प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शन. And now similarly the force acting on the side ASR will be given by F4. राइट साइड जो हमारे पास एक साइड है ASR, उसमें फोर्स हमारे पास एक्टिंग फोर्स हमारे पास F4 is given by I is a current and RS multiply, then it is also perpendicular to each other, then RS that is equal to length of coil is I small l, and B sin 90, and sin 90 that is equal to 1, then F4 that is equal to ILP.
According to the Fleming left hand rule, the directions of force F4 will be inward perpendicular to the plane of coils. इसकी डायरेक्शंस होगा वो इनवर्ड्स होगी perpendicular to the planes of coils, and their directions is outward, and their directions is inward. Now as the force F3 and F4 are equal in magnitudes, दोनों हमारे पास इक्वल है. F3 that is equal to ILB and F4 that is equal to ILB, दोनों के मैग्नीट्यूड्स हमारे पास इक्वल्स है, मैग्नीट्यूड एक्शंस इन अपोजिट डायरेक्शन. बट इसके जो डायरेक्शंस है अपोजिट डायरेक्शंस क्या इसकी अपोजिट along different lines of the actions. Hence the pair of force produce turning effects. जो हमारे पास जो फोर्स है F3 and F4 pair of forces produces turning effect. Hence the coil comes out of the plane of paper. Now the couple of this acts on the coil is called deflecting couple, and the turque is called a deflecting turque. Now turque that is equal to, we know that हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस चैप्टर्स में हमने टर्क्यूस पढ़े थे. टर्क्यू that is equal to magnitude of either force, that means किसी भी वन फोर्स को यहाँ पे लेकर चलना है, and multiply by the perpendicular distance between the lines of actions. Is perpendicular length is a OP. Then OP is a perpendicular distance between the lines of actions. Then now our turque is denoted by tau. Then tau that is equal to one force, either force of magnitude of either force is a ILB. Then ILB multiply PO. This is equation number 1. Let the normal to plane of the coil max theta angle with the directions of field. Is a theta. Directions of is a theta. On seeing from the top the forces acting on sides PQ and RS will appears as shown in figure, above figure. हमने previous figures में स्टडी किए थे. Then now in this right triangle, in triangle POS angle sin theta that is equal to length upon hypotenuse. That means length is a PO upon SP is a hypotenuse. Then OP upon PS. Then now OP that is equal to SP sin theta and SP that is equal to small b. Then OP that is equal to B sin theta. Putting the value of OP in equation number 1. Then from equation number 1, tau that is equal to ILB small b sin theta. But we know that small l and b that is equal to A, or A is the area of coil. बिकॉज कॉइल की जो साइज है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर है, एंड रेक्टेंगल्स की जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ.
then we can write tau that is equal to I a b sin theta, I a b sin theta. If n is the number of turns in coil, n is the number of turns इन लूप की जो संख्या हमारे पास कितना है, स्मॉल n कॉइल, देन टाउ दैट इज इक्वल टू NI A B sin theta, or vector form vector tau that is equal to NI A cross B. This is the required expressions for the turkey. Some special cases in this equation number 2, if theta is 0, then tau that is equal to 0, because sin 0 that is equal to 0, then tau that is equal to 0. In these conditions, if the plane of coil is perpendicular to the magnetic field, then the torque Q acting on it will be 0. And if theta that is equal to 90, then tau that is equal to IAB. This is the maximum conditions. Or we can say, if the plane of coil is parallel to the magnetic field, जो हमारे पास plane of coils है वो magnetic fields के parallel है, field then torque acting on it will be maximum. Then our topic is finished. Thank you.